Good morning, students. I hope you all are doing well. So, students, today we are going to deal with another topic from your grammar, which is clauses. So, now, class 8, this is something very new that you are going to study in your class. बहुत ही न्यू टॉपिक है आपकी क्लास के लिए. आपने इससे पहले ये टॉपिक शायद नहीं पढ़ा है. So, we are going to study it. Okay, and you have to listen very carefully so that you'll not have any confusion in it. Okay, so now I'll tell you first what clauses are. Actual meaning क्या होता है clauses का. Okay, so clauses are group of words with one subject and one verb. Clauses क्या होते हैं हमारे, ये एक group of words होते हैं और इसमें हमेशा वन सब्जेक्ट होता है और वन वर्ब होता है. ठीक है. सो इन अ सेंटेंस वेयर यू गेट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में. ओके, सो दैट इज योर सब्जेक्ट एंड वर्ब इज ऑफ कोर्स योर एक्शन वर्ड, जो एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में. ओके, दैट इज योर वर्ब. सो क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. तो इन विच एवर सेंटेंस यू सी और उसमें आप कोई सब्जेक्ट देखते हैं और वर्ब देखते हैं तो इट इज़ योर क्लॉज. इट मेक्स अ कंप्लीट क्लॉज. सो फर्दर विल understand it better when you look all these examples. I'll explain you and then you'll be get it better. Okay, so let us look at the first example. He laughed. In this sentence, this word he is your subject. Okay, and laughed is your verb. ठीक है. सो इस सेंटेंस में एक वर्ब, एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. सो दिस मेक्स अ कंप्लीट क्लॉज. इसमें ये क्लॉज है सेंटेंस. ओके, नाउ let us look at the next example. Similarly, the kids were laughing at the joke. Kids were laughing. In this sentence, the kids, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. किसके बारे में बात हो रही है, किड्स के बारे में. And they were laughing. तो were laughing हमारा क्या है, verb है. Okay, in this also we got one subject and one verb, so it makes it a complete clause. Okay, similarly here also, I am happy because I won a prize. Now in this sentence, students, first we'll identify पहले कौन सा हमारा सब्जेक्ट है. here I is your subject. I, मैं, उसके बारे में बात हो रही है. and your verb is am. okay, we got one subject, one verb. Now if we यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है. if we read this sentence further, और यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू हो रहा है. क्या है, happy because I won a prize. वो खुश क्यों है, क्योंकि उसने प्राइज, मैं खुश क्यों, क्योंकि मैंने प्राइज जीता है. तो here also we got another subject, है ना, एक और सब्जेक्ट मिल गया हमको इसी सेंटेंस में. And there is one another verb also. So we got here in this sentence there are two subjects and two verbs. So in this we have two clauses. Okay, two clauses in this sentence. In the next sentence, I like mathematics but my brother likes biology because he wants to become a doctor. Now students, this is quite a big sentence. Here in this sentence, first we'll identify a subject in this line. Subject is your I. ठीक है, this is your subject and like is your verb. ठीक है, first clause मिल गया हमको हमारा. this is your first clause. ठीक है. Now if we read this sentence further, mathematics but my brother likes biology. अब यहाँ पे again my brother, this is also your subject.
subject to, another subject, okay, and verb. Like is also verb, so here we got next verb. ठीक है, so this is your first subject, this is your first verb, and this is your second subject, this is your second verb. Now next, biology, because he wants to become a doctor. Here students, again we got one subject, he is a subject 3, and wants is our verb 3. So students, what we came to know from this, that in a sentence ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही subject हो या एक ही verb हो. We can have 2 subjects also, 3 verbs also, which makes a complete clause. ठीक है, so clause, it's not necessary कि एक sentence में एक ही clause हो. There can be multiple clause in a sentence. ठीक है, like we saw in this sentence. So in this sentence, how many clauses we got? We got 3 clauses. Okay, so after reading all these sentences, what we came to know, that the clauses can also be they can be multiple clauses in a sentence, and it is a group of words which have subject and a verb. Okay, clear? I hope it is clear till now. Okay, next we'll move to the classification of clauses. Okay, so clauses are further classified into 2 types, which I am going to tell you now. Okay students, so we have studied the definition of clauses, and I gave you the examples that how we can identify clauses in a sentence. Okay, now we are looking at the classification of clauses. So clauses are further classified into 2 types, which are main clause and subordinate clause. Now there are sentences in which आपको सिर्फ clauses नहीं बताने होंगे, उसके types भी बताने होंगे. Okay, so those sentence they also have further details about it, and then after reading this explanation, you will be able to identify that what are main clauses and what are subordinate clauses. So now students, before going into detail, it is very important to tell you that the main clause, like it's not very important information, but it's necessary you all to know that main clause is also known by the name independent clause. Okay, आप you'll be studying different books, आप अपनी grammar की book पढ़ेंगे, or you'll be referring different kinds of grammar books. So in that if you see this word main clause और इसके साथ अगर independent clause आ जाता है, तो it is very important for you to know that main clause is also known as independent clause. Okay, सो अगर आप बुक में कहीं मेन क्लॉज की जगह इंडिपेंडेंट क्लॉज देख लें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अनदर नेम फॉर मेन क्लॉज. ओके, सो नाउ विल लुक व्हाट दीज clauses are. What is a main clause? So you can get it by the name itself, that independent clause. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? विच स्टैंड अलोन, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, जो अलोन होता है. ओके, सो जो आपका मेन क्लॉज होता है सेंटेंस में, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है. इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस. ओके, इट स्टैंड्स अलोन एंड इट डिनोट्स अ कंप्लीट आइडिया. जब आप मेन क्लॉज देखते हो सेंटेंस में, वो एक अपनी आइडेंटिटी होती है उसकी, और उसको किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती है टू सपोर्ट इट. ओके, सो वो एक कंप्लीट आइडिया देता है अपने आप में. वेयर एज सबऑर्डिनेट क्लॉज आर ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज. मतलब ये सबऑर्डिनेट जो आपका सेकेंड टाइप है क्लॉजेस का, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. लाइक आई सेड हियर, मेन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. वैसे ही सबऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट डज नॉट स्टैंड अलोन. ये कभी भी अलोन स्टैंड नहीं करता है. ठीक है, एंड it never express a complete idea in the sentence. मतलब it always gets a support from the independent clause, main clause. हमेशा इसका support चाहिए होता है.
इट डज नॉट स्टैंड अलोन, ये कभी भी इसका इंडिविजुअल मीनिंग निकल के नहीं आता है सेंटेंस में. ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope it is clear till here. We have studied the two types of clauses. One is main clause, another one is subordinate clause. Main clause is known as dependent clause and subordinate is known as dependent clause. Now further we are going to study about these two topics by looking these examples, and after looking these examples you will be able to follow it correctly. You will be able to know it properly that what these two types are. Okay, so one by one we'll identify in these sentences what are main clause and what are subordinate clause. So before identifying main and subordinate clause, first we have to identify कि इसमें clause क्या है. So I've already told you what are clauses. ठीक है, in this sentence clauses are group of words जिसमें एक subject होता है, एक verb होता है. Similarly, in this sentence also, he. First we will identify he is our subject and is buying is our verb. Okay, ये हमारा हो गया clause. Now if we read this sentence further, he is buying a shirt. In this sentence, वह शर्ट खरीद रहा है. ठीक है, ये अपने आप में ये सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. ठीक है, हमें किसी और चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, क्योंकि हमें कंप्लीट एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ वो शर्ट खरीद रहा है. ओके, सो दिस सेंटेंस इज योर मेन क्लॉज. ओके, नाउ इफ वी रीड दिस फर्दर, विच लुक्स नाइस. सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ आई जस्ट टेल यू विच लुक्स नाइस, अगर मैं सिर्फ इतना सा एक सेंटेंस बोल के छोड़ दूँ, सो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगी वो चीज़ के मैम ने क्या बोला, हम क्या खरीद रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है, आपको नहीं पता लगेगा, है ना. यू विल बी कन्फ्यूज्ड. सो दिस सेंटेंस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, आई राइट लाइक दिस SC इन दिस. ओके, सो आपको समझ में आया कि कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज कैसे डिफ्रेंशिएट हुए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इसने कंप्लीट आइडिया दिया यहाँ तक सेंटेंस में, और यहाँ से हमें आइडिया नहीं मिल रहा है उसका अगर हम उसको अकेले लिखेंगे. सो यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज मेन क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, नेक्स्ट विल रीड दिस नेक्स्ट सेंटेंस. आई मेट अ बॉय हु हेल्प्ड मी. In this sentence also, I is your subject, met is your verb, which is a clause. Okay, and now further we'll look at it. I met a boy is your main clause. Why? Because it is giving a complete meaning to the sentence. I met a boy. हमें इतना समझ में आ रहा है कि मैं एक बॉय से मिला. Now, who helped me? Who helped me? This is your subordinate clause, because it is not explaining, it is not giving the complete idea, this sentence. So this is your subordinate clause and this is your main clause. Okay, now the next sentence. The teacher asked a question but no one answered. In this sentence also, I think by now you will be able to identify by yourself also. The teacher is your subject, right? And asked is your verb. Am I correct? Then the teacher asked a question. So from here till here, teacher asked a question. ये एक अपने आप में एक complete sense बता रहा है, एक complete sentence बता रहा है. So this is your main clause. Okay, we don't need any further information regarding it. Teacher ने question पूछा, we can if we want we can wind up this sentence here itself, but we have further also we have written here, but no one answered. बट अगर हम सिर्फ यही सेंटेंस लिख देंगे बट नो वन आंसर, मैं ये अकेला सेंटेंस लिखूंगी तो आप समझ पाओगे उसको? नहीं समझ पाओगे. सो दिस इज योर सबऑर्डिनेट clause, which is independent clause. Okay, now the last example.
He takes medicine but he suffers from fever. Here in this sentence, students, there are two subjects and two clauses. I hope you all can identify. He is your subject, takes is your verb. Okay. So in this sentence, till this part of the sentence, you found your main clause. ठीक है. बाकी जो sentence है, because he suffers from fever. Now in this sentence we got another subject. एक और subject मिल गया हमको और एक और verb भी मिल गया है. Okay. So there are two subjects and two clause. As I told you earlier also that it's not necessary that in a sentence there'll only be one clause. There can be two clause also. There can be three clause also in a sentence. So we got it here also. In your last sentence we have multiple clauses. Okay, we got two clauses. Now in this sentence, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये main clause है, and from here till here is your subordinate clause. Why? Because from here till here we are not getting the complete information about the sentence. Because he suffers from fever. Because यहाँ पे because आ गया है, because आ ही गया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके पहले का रीज़न क्या था. ठीक है. So he takes a medicine is your main clause, your independent clause, and because he suffers from fever is your subordinate clause, your dependent clause. Okay, so students, I quickly revise what we have studied in this class because it's a new topic, so it will be little tricky for you, but it's not difficult if you listen to it very carefully. It's very easy, and if I'll give you more examples to make it little more easy, and so that you'll be able to understand it better. So we have studied that there are clauses, the definition of clauses. It's a group of words with one subject and one verb. We have looked into the sentences of clauses, and we have identified that what are clauses in a sentence. Next, we studied the classification of clauses, and there are two types of clauses: main clause and subordinate clause. Main clause is also known as dependent clause. Subordinate is also known as dependent clause. ठीक है. मेन क्लॉज जो होते हैं हमारे, वो अलोन स्टैंड करते हैं, एंड इट गिव्स अ कंप्लीट आइडिया. उसको किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती है सेंटेंस में, किसी और फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है मेन क्लॉज को. बट सबऑर्डिनेट क्लॉज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज, and they do not stand alone. They do not give a complete meaning to the sentence. And then we studied the examples. We looked into the examples of main clause and subordinate clause, and we identified that what are main clause in a sentence and how we can identify the subordinate in a sentence. So students, this is all for this class. I hope you understood it and enjoyed studying it. Now further we'll look into it in the next class. Till then, thank you.